آج تک جو ہم نے سوشیولوجی میں پڑھا اس کی ایک چھوٹی سی ری انفورسمنٹ ہوگی اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو ایکچولی اسٹارٹ آر نیو ٹاپک. سوشیولوجی از بیسکلی ٹاکنگ اباؤٹ ٹو اسٹیک ہولڈرز وچ از سوسائٹی اینڈ انڈیویجول. سوسائٹی جب انڈیویجولس کو سکھاتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے کلچرس، اس سوسائٹی کے نارمس، اس سوسائٹی کے بلیفس انجیکٹ کرتی ہے جب انڈیویجولس میں، اس کو ہم سوشلائزیشن کہتے ہیں. اور اس کو ایک پرسپیکٹیو ہے اسٹرکچرلزم جو یہ کہتا ہے کہ سوسائٹی انڈیویجولس کو بتائے گی، سکھائے گی، انجیکٹ کرے گی ان کے اندر اس سوسائٹی کا کلچر. اس کے بالکل اپوزٹ ایک گرینڈ نیریٹو ہے جس کو ہم انٹریکشنزم کہتے ہیں. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, I hope you're doing well. And it's been long that I have been delivering all my lectures in English, and I've come to this conclusion that there are students who really need to understand the subject matter in other languages as well. So to increase the inclusivity, I am trying to deliver my lecture rather in a bilingual way. So from now on I will be using English and Urdu اور ہندی I would say, تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو سبجیکٹ میٹر کی سمجھ آ سکے. خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس پاکستان میں یا انڈیا کے اندر موجود ہیں یا پاکستان سے باہر جو سب کانٹیننٹ کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو اردو اور ان لینگویجز کو، ہندی کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے انکلوزیوٹی پیدا ہو سکے اور وہ سبجیکٹ میٹر کو سمجھ سکیں. آج تک جو ہم نے سوشیولوجی میں پڑھا اس کی ایک چھوٹی سی ری انفورسمنٹ ہوگی اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو ایکچولی اسٹارٹ آر نیو ٹاپک. ٹل دس ڈیٹ وٹ وی ہیو اسٹڈیڈ اباؤٹ سوشیولوجی از کہ سوشیولوجی از بیسکلی ٹاکنگ اباؤٹ ٹو اسٹیک ہولڈرز وچ از سوسائٹی اینڈ انڈیویجول. آج تک ہم نے جو سوشیولوجی میں پڑھا اٹ واز اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا سوشیولوجی ایز اے سبجیکٹ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سوشیولوجی کے اندر جو دو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں which are the key stakeholders, society and individual itself. سوسائٹی جب انڈیویجولس کو سکھاتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے کلچرس، اس سوسائٹی کے نارمس، اس سوسائٹی کے بلیفس انجیکٹ کرتی ہے جب انڈیویجولس میں، اس کو ہم سوشلائزیشن کہتے ہیں. اور اس کو ایک پرسپیکٹیو ہے اسٹرکچرلزم جو یہ کہتا ہے کہ جب سوسائٹی انڈیویجولس کو، اٹ از دا جاب آف دا سوسائٹی، اٹ از دا رول آف دا سوسائٹی، دس از ہاؤ دا سوسائٹی ریمینز ان اسٹرکچر، دس از ہاؤ سوشل آرڈر از اچیوڈ، دس از ہاؤ تھنگز ورک. کہ سوسائٹی انڈیویجولس کو بتائے گی، سکھائے گی، انجیکٹ کرے گی ان کے اندر اس سوسائٹی کا کلچر. اب اس کے بالکل اپوزٹ ایک گرینڈ نیریٹو ہے جس کو ہم انٹریکشنزم کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر انڈیویجولس کی جو سوشل ایکشن ہے، جو ان کی انٹر ایکشن ہے، انٹریکشن از بیسکلی اے کمپاؤنڈ ورڈ، انٹر ایکشن. سو ایکشن بٹوین انڈیویجولس وچ از سوشل ایکشن، جو میکس ویبر کی سوشل ایکشن تھیوری ہے جس کے 4 ورژنس سوشیولوجی اے لیولس میں یا آئی بی میں یا اے کیو اے میں آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، یا جی سی ای یا ایڈیکسل سوشیولوجی میں، which is symbolic interactionism, labeling theory, dramaturgical theory یا dramaturgical approach, and the last one is social exchange theory. یہ 4 ورژنز ہیں انٹریکشنزم کے یا سوشل ایکشن تھیوری کے، جس کو میکس ویبر نے کوائن کیا. اینڈ اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیویجولس، اینڈ اٹس بیسکلی اے مائکرو سوشیولوجیکل اپروچ which focuses on and emphasizes on individuals especially and their interactions with other individuals, right? So unlike structuralism جو یہ کہتا ہے کہ it is basically the society who socializes and instills the culture into the individuals to maintain social order، اس کے بالکل opposite
इंट्रैक्शनिज्म ये कहता है कि नहीं, सोसाइटी के अंदर जो भी नॉर्म्स, जो भी बिलीव्स, जो भी कस्टम्स और जो भी वैल्यू सिस्टम्स बनते हैं, दे बेसिकली आर इवॉल्विंग एंड डायनामिक कॉन्सेप्ट्स। और वो इस वजह से कि इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उन इंट्रैक्शंस की बेसिस पे पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स जनरेट होते हैं, और उन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स के लिए इंडिविजुअल्स कुछ मीनिंग्स जो हैं वो उनको असाइन करते हैं, और उन मीनिंग्स की बेसिस के ऊपर उनको बिलीफ या नॉर्म या नॉर्मलाइज किया जाता है, या उनको वैल्यूज़ का दर्जा दिया जाता है। सो बेसिकली इट इज़ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंट्रैक्शन, और बेसिकली इसके अंदर इंडिविजुअल इज़ ग्रेटर देन सोसाइटी बिकॉज इट इज़ द इंडिविजुअल हु शेप्स एंड हु इवॉल्व्स द सोसाइटी। ठीक है, सो फॉर interactionists, society is a dynamic concept, whereas for structuralists society is a static concept. ठीक है, जब static concept का मतलब ये है कि अगर ये criticism है structuralism का बेसिकली जो interactionists देते हैं, which is कि अगर society एक ऐसा process है कि जिसमें society is going to shape, control and decide for individuals, तो सोसाइटी तो कभी इवॉल्व हो ही ना। 3000 साल पहले, 3000 years ago, the way the society was, it would have been the same as of today, but ऐसा नहीं है। सोसाइटी जो है वो ग्रेजुअली इवॉल्व होती है क्योंकि उसका कल्चर इवॉल्व होता है। कल्चर इसलिए इवॉल्व होता है क्योंकि लोगों के दरमियान इंट्रैक्शंस जो होती हैं वो डायनामिक होती हैं, वो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जो हैं वो चेंज होते हैं। उन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर की बेसिस के ऊपर नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर और बिलीव्स जो हैं उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, और वो तब्दील होते हैं, और वो इन दी एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जब पास ऑन होते हैं वो मीनिंग्स, और उनकी कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग और शेयरिंग होती है, और ऐसे जाकर फिर एक सोसाइटी के अंदर वो चीज़ एक नॉर्म बन जाती है, और उस नॉर्म, उस बिलीफ, उस कस्टम, उस वैल्यू को कलेक्टिवली हम कल्चर कहते हैं। ठीक है, सो इंट्रैक्शनिस्ट्स claim that individual is greater than society. Micro-sociology is responsible to create macro structures. ठीक है, it is actually the social action of the individuals who shape the society rather than the socialization of the society towards individual who brings social order. तो एक तरफ आप स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्डर की बात करते हैं, और एक स्टैटिक सोशल सिस्टम की बात करते हैं, विच इज स्ट्रक्चरलिज्म, विच इज ए मैक्रो सोशियोलॉजिकल सिस्टम जो कि सोसाइटी को होलिस्टिकली देखता है एज वन ऑर्गेनिज्म, वेयर एज जो माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है टूवर्ड्स द सोशल सिस्टम, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, जिसमें जो की नोट पर्सन है, जो कि फोकल आइडेंटिटी है, जो कि फोकल जो एंटिटी है, वो इंडिविजुअल है, एंड इट इज द इंडिविजुअल who actually through their social action and their interaction generate patterns of behavior, और वो patterns of behavior ultimately transform into norms and culture and become beliefs and customs. ठीक है, और इस तरीके से वो सोसाइटी का एक ब्लूप्रिंट बनते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की तरफ ज़्यादा फोकस है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर की तरफ ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ये दोनों ग्रैंड नैरेटिव्स एक दूसरे के अगेंस्ट, देयर ऑपोजिट फ्रॉम ईच अदर। तो जब भी आपसे इंटरैक्शनिज्म के बारे में बात हो तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इट्स टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरैक्शंस, इट्स टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअलिटी, इट्स टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल चॉइसेस रादर देन कलेक्टिव चॉइसेस। ठीक है, ये फिलॉसफी के अंदर आपको दो अपोजिंग कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। सो वन इज कलेक्टिविज्म एंड द अदर वन इज
एटमिज्म. सो जो एटमिज्म है बेसिकली उसकी एक आप सोशल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इंटरेक्शनिज्म की फॉर्म में, विच एक्चुअली फोकसेस ऑन इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल डिसीजंस, इंडिपेंडेंटनेस. वेयरएज कलेक्टिविज्म इज कि जहाँ पे लोगों को, जहाँ पे किसी भी चीज़ या फिनोमेना को कलेक्टिवली इकट्ठा देखा जाता है कि ये इकट्ठे मिलकर किस तरीके से जो है वो शक्ल इख्तियार करते हैं. और there is another thing that you must know about interactionism is कि interactionism के 4 versions हैं. जब मैं बोलूँ interactionism और social action theory, actually I'm saying the same thing, right? So interaction and social action. So interaction is the action between interaction, like दो लोगों के दरमियान. And social action का मतलब भी यही है कि when individuals interact. ठीक है, तो ये मैक्स वेबर का काम है, उनकी बहुत डेडिकेशन है सोशियोलॉजी के अंदर, एंड दिस इज वन ऑफ हिज मेजर कंट्रीब्यूशंस टू सोशियोलॉजी. तो जब भी आप इंटरेक्शनिज्म के ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लिखें, यू आर ऑलवेज गोइंग टू मेंशन मैक्स वेबर, राइट? सो मैक्स वेबर को अगर आप यहाँ पर साइट करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, you'll get a mark, right? So in the next lectures I'm going to discuss the 4 different versions of interactionism with you, which is symbolic interactionism, labeling theory, dramaturgical approach or dramaturgical theory, and last but not the least, social exchange theory. So in the upcoming lectures I'm going to discuss in detail, and obviously what I do is usually articulate and for illustration of all these theories for you, right? Meanwhile you just try to digest के interactionism और structuralism में क्या फ़र्क है और ये किस तरीके से दो मुख्तलिफ ग्रैंड नैरेटिव्स एक्सप्लेन करने की या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी को, सोशल सिस्टम को, राइट? और अपने दूसरे दोस्तों को, इफ़ दे आर स्ट्रगलिंग विद IGCSE O levels, A level sociology, you can send them these videos or this channel so that they can learn from it. In future I'm going to also introduce economics, business and politics lectures. So this is a platform where all the A levels, Cambridge and Edexcel, IB and IGCSE students can learn from. So stay with me, right? Meanwhile I start my next lecture. उतनी देर आप अपनी बुक से स्ट्रक्चरलिज्म और इंटरेक्शनिज्म की रीडिंग करके रखें, because if you read you will be more smooth to understand what I am going to teach you in the next lecture. Thank you so much.